Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So students, plus 2 board 2025 ପାଇଁ ଆମେ डिस्कशन କରୁଥିଲେ ଇଂଲିଶର ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ 2 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଶେଷ କରିବା ଷ୍ଟୋରୀରେ ହିଁ ଶେଷ ହେବ ସବୁକିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରୋଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ପୋଏମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଷ୍ଟୋରୀ ଆମର ଚାଲିଥିଲା, ଷ୍ଟୋରୀର ଇଏ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ସରିଲା ପରେ। ଓକେ, ଷ୍ଟେ ହଙ୍ଗରି ଷ୍ଟେ ଫୁଲିସ୍ ଟପିକ୍ର ଆମେ ଶେଷ କରିବା 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। फास्ट क्वेश्चन रहा व्हाट डज जॉब से अबाउट हिज मदर मदर को अबाउट रे जॉब कौन कहते जॉब्स वाज गिवन अवे फॉर अडॉप्शन बाय हिज अनवेड मदर बट शी इंसिस्टेड दैट he would have access to college education on growing up. Steve Jobs appreciates his mother's concern for his education and well-being. जोटा कि अनवेड मदर को अबाउट से कहते केमती मदर माने कॉलेज टाइम रे समय ही कॉलेज टाइम ही से विदाउट मैरेज करके माने मैरेज न करा पूर्व जॉब जन्मग्रहण करते तो कॉलेज टाइम समय कथा सी लिखिं माने जो स्टोरीटारे तापर देखा हाउ डिड ही फस्टर पेरेंट्स अडॉप्ट हिम तो केमती यहाँ है माने जड़े ने आप जानते कि स्टोरी जी पढ़ते जानते जड़े अडॉप्ट करते सेटा केमती कौन थिला देखिए द फॉस्टर पेरेंट्स हैड लॉन्ग वांटेड टू अडॉप्ट ए चाइल्ड एंड हैड एनलिस्टेड देयर नेम्स विद द authorities after Steve was born they got a telephone call तांको टेलीफोन कॉल मिलला that a baby was available for adoption तो से जानले कि गोटे बेबीटा अडॉप्शन माने अडॉप्शन पे अवेलेबल हो जाइछि they readily come forward to take Steve under their care. Steve's mother was initially unhappy तो माँ बहुत unhappy थिले about it because the parents were not graduates तो से जो parents थिले ना तो मैंने graduate ही नथिले okay after they undertook to send Steve to college his mother relented to sign the adoption paper okay तापरे what does he say about his studies in the रेड्स कॉलेज तो सांग कॉलेज स्टडी विषय से केमती कौन लिखिछन सेटा पचाला रेड्स कॉलेज वाज एक्सपेंसिव द हाई ट्यूशन फीस ड्रेन्स हिज पेरेंट्स सेविंग्स ही फेल्ट द करिकुलम वाज ऑन इंटरेस्टिंग एंड नॉट ऑफ एनी ग्रेट वैल्यू तांको करिकुलम भी एते इंटरेस्टिंग नथिला पैसा भी एते माने पाखरे नथिला ओके व्हाई डिड ही ड्रॉप आउट फ्रॉम कॉलेज कहीं से कॉलेज रो ड्रॉप आउट नेले क्वेश्चन पे बहुत इंपोर्टेंट अच्छी बहुत आसूची क्वेश्चन है Steve was disillusioned with the studies in the college. He felt those were not of any value and soon lost interest in the classes. He dropped out, but out of curiosity attend calligraphy classes. तो calligraphy classes से करथिले तापरे what difficulties did he face after he ड्रॉप्ड आउट तो कौन कौन सब डिफिकल्टीज फेस कले जो ड्रॉप आउट नेले स्टीव वाज स्कैंड थिंकिंग अबाउट हिज अनसर्टन फ्यूचर ही वाज पेनलेस टू ही स्लेप्ट ऑन फ्लोर्स इन हिज फ्रेंड्स रूम्स and managed to buy some little food by exchanging empty coke bottles for 5 cents each on Sunday night he would walk 7 kilometers to reach the Hare Krishna temple for a free sympathious dinner माने देखंतु केते हैरान से हेइथिले ओके तापरे व्हाई डिड ही डिसाइड टू लर्न कैलीग्राफी कहीं से डिसाइड कले कि कैलीग्राफी शिखबार ही अच्छी देयर वाज नो स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस सेमती किसी स्पेसिफिक रीजन तो नथिला कारण सेमती किसी नथिला इट वाज ए प्योर चांस दैट he attend calligraphy classes but soon he found it very exciting to see how beautiful letters could be designed he learned about strif and sans serif fonts okay मेन होची इंटरेस्ट तापरे how did his knowledge of calligraphy help him केमिति से जो calligraphy knowledge से नहीं तो सेटा हेल्प कला लाइफ रे when he began to work to develop the Apple Macintosh computer a decade later he utilized his calligraphy skills to make the computer unique by offering the user multiple choice of fonts
then what does he mean by connecting the dots? तो जो डॉट्स गुड़ाक कनेक्ट करके जो करथले तार मीनिंग कौन थिला? He alludes to the many small and inconsequential incidents that happened during his difficult days. Later, he could make use of these small things to achieve great success in life. The dots are the small incidents, and the way he made use to them to his advantage later is connecting. ओके बुझीपारे आशा करुँच जिनसटा स्टोरीटा जो बुझी गोटे पिला आराम से बुझीपारे जिनस गुड़ाक है एत भी हार्ड क्वेश्चन ना एवं देखिए आउ कि सिलेक्टेड क्वेश्चन टोटाल जी अच्छे आम करदे ये वीडियो है। हाउ डिड जॉब्स सेट ऑफ द एप्पल आईएनसी? स्टीव जॉब्स joined hands with his friend Woods and began work in his father's garage in a very small way. Later, the venture grew phenomenally to become Apple Inc. बुझिए? How did he lose his position in Apple Inc? Steve began to differ from his CEO on matters of Apple's future growth path. The gulf between the two widened, and at one stage, the board of directors eased Steve out, supporting his rival. How did he feel about his dismissal? Steve Jobs felt humiliated and very frustrated. He felt completely let down. How did he return to Apple Inc? Steve's new venture next was brought over by Apple, paving the way for his honorable return. Okay, केमती पुणी रिटर्न करले सेटा पचाला तापर हाउ डिड द क्वेटेशन ऑन डेथ अफेक्ट जॉब्स? तो जो डेथ रो क्वेटेशन कथा कह सेटा केमती अफेक्ट करथिला? द क्वेटेशन वाज इफ यू लिव ईच डे as if it was your last. Someday you will most certainly be right. Steve Jobs realized death is inevitable. तो से जानी थिले कि डेथ हूँ इनेविटेबल, डेथ निहाती भाव में आसब ही आसब, इट कैन कम एनी डे, केते बड़े भी डेथ आसीपे. सो ही बिकम डिटरमाइंड टू मेक द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ स्पान बाय डूइंग दैट ही लव्ड मोस्ट टू डू. है जीवन में से जहाँ भी जो जिन कराया से भल पाऊँ से जिन निहाती करदे उचित, कारण केते भी लाइफ चली जापे. हाउ डिड कन्सियसनेस ऑफ डेथ इंस्पायर हिम? केमती जो डेथ रो कन्सियसनेस बहुत इंस्पायर करथिला. ही न्यू वन डे ही वुड बी स्वेप्ट अवे बाय डेथ. तो से जानी थे दिन आसब से डेथ डेथ जीवन डेथ दिन लाइफ रे आसब ही आसब. सो ही वाज नॉट unduly concerned about it, since death has to come to one and all. A person should work following his heart's call and intuition. तेणु जहाँ भी आमर काम अच्छी आमको ता पूर्व सारिबार अच्छे, जोटा कि आमर इच्छा शक्ति जो काम उपर अच्छी, जो काम करने आमर आग्रह अच्छी से काम को आमको सारी देवार अच्छी. ओके, व्हाट वाज द डॉक्टर्स एडवाइस टू हिम व्हेन ही वाज डिसऑनेस्ट विथ कैंसर? तो डॉक्टर को एडवाइस कौन थिला? The doctors declared that the cancer was fatal but could be fought off by surgery. How does Jobs view death? केमिति जॉब डेथ को देखी थिले? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा, बोले देखिबे. Jobs did not like to die, but at the same time was not overly concerned about it. He felt that death was a clearing process that removes the dead old folks and brings in the new young ones. Since it is a normal cycle, it should worry people much. What is most important in face of death? When death is knocking at the door, one must need the inner voice and work according to it. The opinion of others must not affect a person with limited time to live. Next question, last question एटा. व्हाट वाज जॉब्स फेयरवेल मेसेज? तो लास्ट इंपोर्टेंट मेसेज कौन था? फेयरवेल मेसेज. यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोटे भलसे ध्यान देवे. ही वांटेड द यंग स्टूडेंट्स टू स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश. तो यहाँ ही मोस्ट इंपोर्टेंट था, स्टे हंग्री और स्टे फुलिश. है बाय डूइंग सो वन कैन वर्क टुवर्ड्स मोर अकम्प्लिशमेंट इन लाइफ एंड एक्वायर मोर नॉलेज. है तो यहाँ मेसेज था, जोटा कि फेयरवेल मेसेज कौन? स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश. है तो ये पे
सिलेक्टेड 2 मार्क क्वेश्चन जोटा कि आम स्टोरी शेष कले सब सरी जाइए प्रोज्र सरला पोएम्र सरला स्टोरी भी सरला ओके जदि टाइम हम तो आर्ट्स पिला हम जब यार फाइनाल सिलेक्शन दे पारि बट साइंस पिला तो टाइम नहीं तो साइंस पिला जो मैंने साइंस पिला देखुन से मो मैंने बेस्ट हम कौन से VST जी भी कराई तार 2 मार्क गुड़ा भलसे देखी दिंतु मैंने VST 5टा क्लास अटेंड कर दिंतु प्लस ये जी आम 2 मार्क सिलेक्टेड 1 by 1 विषय माने यूनिट वाइज आम आलोचना करें ताकू देखी दिंतु आपंकर हो किसी असुविधा हेनी बट आर्ट्स पे जो अच्छे से एग्जाम जब किसी दिन लेट्रे अच्छी तो मुझे देखी जब टाइम है तो गोटे फाइनाल सिलेक्शन 2 मार्क अपलोड करी बट आंसर अपलोड करहबनी क्या क्वेश्चन विथ आंसर मेकिंग करके अपलोड करें टाइम माने पॉसिबल नुहे ओके जब हम मुझे क्वेश्चन गुड़ाक आउे अपलोड करदेवी 2 मार्क क्वेश्चन तो आप केमती कौन आंसर पाए ता भी बुझेदेवी केमती आंसर पाइबे जो मैंने ना से केमती पाइबे से देखिए कहीदेवी जब टाइम हम है बट जो मैंने साइंस पिला अच्छे से शेष करके सागे सागे VST देखी दिंतु आप समय बहुत कम रहा VST जो 5टा कराई भर आउ निहती क्वेश्चन आसो जी आम डिस्कसन करें कीवर्ड बारंबार कौन रही कीवर्ड को जमा भूलें जहाँ भी हो कीवर्ड को भूलें ना है खाली आप कहें जे क्वेश्चन देला व्हाट डज जॉब से अबाउट हिज मदर यदि क्वेश्चन पता व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस पैसेज मैंने तुम ये पैसेज रू मदर के बाटर कौन जाना पाइल एमती क्वेश्चन पचारा राइट सम इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट जॉब्स मदर तो यहाँ भी क्वेश्चन सेम रहे बट मदर को ऊपर ही पचार ना कीवर्ड तो मदर ना तेणु जमी भी क्वेश्चन आस डायरेक्टली यही क्वेश्चन आसले भी जहाँ भी क्वेश्चन आसो आंसर सेम लिखे कहीं ना क्वेश्चन कीवर्ड सेम रोचे बुझे तो ये लिखे चलो आज क्लास को एटेंड करवा देखा आप सहित नेक्स्ट एंड फ्रेश क्लास लव यू ऑल।